ॐ हरिः ॐ अथ श्रीदेव्यः कवचम्। ॐ अस्य श्रीचण्डीकवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप्छन्दः चामुण्डा देवता अग्न्या सूक्तमातरो बीजं दिग्बन्धदेवतास्तत्त्वं श्रीजगदम्मा प्रीत्यर्थे सप्तशतीपाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः। ॐ नमः चण्डिकायै। मार्कण्डेय उवाच यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्यकश्चिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यतमं विप्रं सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यं तत्शृणुष्व महामुने। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुसुमाण्डेति चतुर्थकं पञ्चमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तितः। उक्तान्येतानि नामानि ब्राह्मणेव महात्मना। अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतो रणे विषमे दुर्गमे चैव भार्यातः शरणं गतः नातेषां जायते किञ्चित् दशुभं रणसङ्कटे नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं नहि यैस्तु भक्त्या स्मृता नूनं तेषां वृद्धिः प्रजायते। ये त्वां स्मरन्ति देवेशि राक्षसेतान् संशया प्रेतसंस्था तु चामुण्डा वाराही महिषासना ऐन्द्री गजसमारूढा वैष्णवी गरुणासना माहेश्वरी वृषारूढा कौमारी शिखिवाहना लक्ष्मीः पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना रम्ये हंससमारूढा सर्वाभरणभूषितः। इत्येता मातरः सर्वः सर्वयोगसमन्वितः नानाभरणशोभाढ्या नानारत्नोपशोभितः दृश्यन्ते रथमारूढा देव्या क्रोधसमाकुलः सख्यं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुसलायुधं खेटकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च सर्गमायुधमुत्तमं दैत्यानां देहनाशाय भक्तानामभयाय च धारयन्त्यायुधानीत्थं देवानां चाहिताय वै नमस्तैस्तु महारौद्रै महाघोरपराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभयविनाशिनी त्राहि मां देवि दुष्प्रेक्षे शत्रूणां भयवर्धिनी प्राच्यां रक्षतु मामैन्द्री आग्नेयामग्निदेवता दक्षिणे वतु वाराही नैऋत्यां खड्गधारिणी प्रतीक्ष्यां वारुणी रक्षेत् वायव्यां मृगवाहिनी उदीच्यां पातु कौमारी ईशान्यां शूलधारिणी ऊर्ध्वां ब्रह्माणि मे रक्षेत् हस्ताद् वैष्णवी तथा एवं दशदिशो रक्षेत् चामुण्डा सहवाहना जया मे चाग्रतः पातु विजया पातु पृष्ठतः। आजिता वामपार्श्वे तु दक्षिणे च पराजिता शिखामुद्धोतिनी रक्षे धूमामूर्धनि व्यवस्थिता मालाधरी ललाटे च भ्रुवो रक्षे यशस्विनी त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये यमघण्टा च नासिके शङ्खिनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोर्द्वारवासिनी कपोलो कालिका रक्षेत् कर्णमूले तु शाङ्करी नासिकायां सुगन्धा च
उत्तरोष्ठे च चर्चिका अधरे च मृत्कला जिह्वायां च सरस्वती दन्तां रक्षतु कौमारी कण्ठदेशे तु चण्डिका घण्टिकां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके कामाक्षे चिबुकं रक्षेत् वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी नीलग्रीवा बहिः कण्ठे नलिकां नलकूबरी स्कन्धयोर्खड्गिनी रक्षेत् बाहुमे वज्रधारिणी हस्तयोर्दण्डिनी रक्षेत् अम्बिका चाङ्गुलीषु च नखञ्छूलेश्वरी रक्षेत् कुशो रक्षेत् कुलेश्वरी स्तनो रक्षेन्महादेवी मनः शोकविनाशिनी हृदये दलिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभौ च कामिनी रक्षेत् गुह्यं गुह्योश्वरी तथा पूतना कामिका मेढ्रं गुदे महिषवाहिनी कट्यां भगवती रक्षेत् जानुनी विन्ध्यवासिनी जङ्घे महाबला रक्षेत् सर्वकामप्रदायिनी गुल्फयोर्नारसिंहीं च पादपृष्ठे तु तेजसी पादाङ्गुलीषु श्रीरक्षेत् पादाधस्तलवासिनी नखान्द्रष्टाङ्कराली च केशाश्चैवार्धकेशिनी रोमकूपेषु कौबेरी त्वचं वागीश्वरी तथा रक्तमज्जावसा मांसान् यस्थिमेधांसि पार्वस्ती अन्त्राणि कालरात्रिश्च पित्तं च मुकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कफे चूडामणिस्तथा ज्वालामुखी नखज्वाला मभ्भेदा सर्वसन्धिषु शुक्रां ब्राह्मणि मे रक्षेत् छायां छात्रेश्वरी तथा अहङ्कारं मनोबुद्धि रक्षेन्मे धर्मधारिणी प्राणापानौ तथा व्यानमुदानं च समानकं वज्रहस्ता च मे रक्षेत् प्राणं कल्याणशोभना रसे रूपे जगन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्त्वं रजस्तमश्चैव रक्षेन्नारायणी सदा आयु रक्षतु वाराही धर्मं रक्षतु वैष्णवी सा कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रिणी गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षेत् पशुम्ने रक्ष चण्डिके गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षेत् पशुम्ने रक्ष चण्डिके पुत्रान् रक्षेन्महालक्ष्मीर्भार्यां रक्षतु भैरवी पन्थां सुपता रक्षेत् मार्गं क्षेमकरी तथा द्वारे महालक्ष्मीर्विजया सर्वतस्थितः रक्षाहीनं तु यतस्थानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयन्ती पापनाशिनी पदमेकं न गच्छेत्तु यदीक्षेच्छुभमात्मना कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति हश्च तत्र तत्रार्थलाभश्च विजया सर्वकामिका यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितम् परमेश्वर्यमतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मर्त्या सङ्ग्रामे स्वपराजिता त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्या कवचेनावृतः पुमान् इदं तु देव्यः कवचं देवनामपि दुर्लभं या पठेत् प्रियतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्राद्धयान्विता देवी कला भवेतस्य त्रैलोक्येष्वपराजितः जीवेद् वर्षशतं साग्रमपमृत्यु विवर्जितः नास्यन्ति व्याधयः सर्वे लुता विस्फोटकादया स्थावरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं चापि यद्भिषम् अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूचरः खेचरश्चैव जलजाश्चोपदेशिकः सहजा कुलजा माला डाकिनी साकिनी तथा अन्तरिक्षचरा घोरा डाकिन्यश्च महाबला ग्रहभूतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसा ब्रह्मराक्षसबेतालः
कुष्माण्डभैरवादय नश्यन्ति दर्शनातस्य कवचे हृदि संस्थिते मनोरथी भवेत् राजस्तेजो वृद्धिकरं परं यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले जपेत् सप्ततीं चण्डी कृत्वा तु कवचं पुरा यावद् भूमण्डलं धत्ते सशैलवनकाननं तावत् तिष्ठति मेदिन्यां सन्ततिः पुत्रपौत्रिकी देहान्ते परमं स्थानं यत्सुरैरपि दुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामायाप्रसादता लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते ॐ इति दिव्या कवचम् उत्सवः श्रीदुर्गाणप्रणमस्तुः।